Hello friends. So we are going towards our topic that is from gathering to growing crops. Chapter 3, class 6 history. Right. In our previous video or in our last lectures we have learned that who are the hunter gatherers, right? Then what they used to do for their living, then how they become knowledgeable, what they used for to do for it, right? Then how they transformed themselves to the farmers and herders, and then they started growing crops. How this phenomena has been evolved, what were the things that कम अंडर देयर लाइफ, मतलब ऐसे क्या फेस करना पड़ा उनको लाइफ के अंदर जिसकी वजह से उनको ये चीज़ें अपने आप इवॉल्व हो गई. हाउ द ह्यूमन बिकम दिस मच नॉलेजेबल. सो we are going to learn these things in our this video also, right? So let's begin with it. So it's the new way of life. Wow, a new way of life. What is it? It is about the storing seeds and storing animals. Till now we saw that who are the hunter gatherers, what they used to do for their living, and now we are going further ahead that they also started storing the seeds, because we learned that the hunter gatherers become the farmer. वो फार्मर तो बन चुके थे, पर फार्मर बनने के बाद हमने सीड्स को भी स्टोर करने स्टार्ट कर दिया. हमने देखा कि हंटर गैदर्स जो थे वो हर्डर्स बन चुके थे, बट नाउ दे ऑल्सो स्टार्टेड स्टोरिंग द एनिमल्स. हाउ वाई दे यूज टू डू दिस थिंग्स, ऐसे क्या हुआ जिसकी वजह से दे स्टार्टेड डूइंग दिस. सो लेट अस बिगिन विद इट. एज द ग्रेन्स हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ द फूड एंड seed, the people had to think of the way of storing it. In many areas they began making the large clay pots and woven basket dug pits into the ground. So how they started storing the seeds, because उस टाइम तो फ्रिज होता नहीं था, उस टाइम पे तो कोई इक्विपमेंट नहीं था. सो उनने चीज़ें स्टोर कैसे कर दी? क्वेश्चन है ना. हाँ है. तो फिर तो आंसर इसका ये है, लाइक यू नो द सब्जी वाला विच कम्स इन आवर कॉलोनी, right? He used to carry a basket, right? They also used to make this basket. The hunter gatherer also used to make this basket, that kind of basket, and then they store those seeds in those baskets, right? That we have a clay pot, a matka on our house, right? They hunter gatherers start making those clay pots at that time. We are using right now, but that was evolved at that time. They used to make the pot from the clay, and then they used to store the seeds in those clay pots, and then those things, those baskets and those clay pots are dug into the ground. Means उनको फिर ज़मीन में ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता था. So that means गाड़ दिया जाता था. So that means when the next year when they need that stuff, वो seeds उनको जब चाहिए होते थे, then they take it out and then start irrigation. So in this way they store the seeds. And how they store the animals and why they store the animals? Because animals multiply naturally. इसमें hunter gatherers को कुछ करना नहीं पड़ता था, अपने आप होता था, natural process है. Then beside, if they are looking after carefully, they provide milk, which is important source of food, and meat whenever required. In other words, the animals that are reached can be used for store of food. Means हंटर गैदरर्स को एनिमल को स्टोर करके एक बेनिफिट था, उनने वहाँ भी लॉजिक यूज़ किया. बेनिफिट क्या था? इफ़ अगर वो एनिमल्स को स्टोर करते हैं तो उससे क्या होगा? उनको मिल्क मिलता था और मीट जब उनको जब भी ज़रूरत होती थी, राइट? सो दिस वॉज द थिंग. उन्होंने अपने बारे में सोचा, उन्होंने थोड़ा सा लालच में आके और अपने बारे में सोचा कि एनिमल्स को रख के क्या होगा. एनिमल्स मिल्क प्रोवाइड करेंगे, एज वेल एज जब मीट चाहिए होगा तो उस टाइम मीट भी प्रोवाइड हो जाएगा. एज वेल एज वाई द स्टार्टिंग द स्टोरिंग द सीड्स, सो दैट नेक्स्ट ईयर जब हम इरीगेशन करेंगे उस टाइम पे हमको सीड्स की अवेलेबिलिटी ईजिली हो जाएगी. सो दिस वॉज द होल फिनोमिना. कैन यू इमेजिन द थिंग्स? देयर वॉज अ पर्सन कॉल्ड एज हंटर गैदरर जिसको कुछ भी नहीं आता था. ही यूज टू हंट द एनिमल्स एंड स्टोर दैट हंटेड एनिमल्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड टू ईट for their food, right? Then they started irrigation, right? They learned about the irrigation, how these crops are evolved, how these animals are coming on, right? They learned about it. Then they started irrigation, and after starting irrigation then they store the seeds for the next year also, right? So this was the whole timeline regarding this. As you can imagine, as you are thinking about that, how fast this is going on, it is not going in the fast. It has been evolved in the pretty much good years, but
as per our knowledge and as per our requirement, we are going a little bit fast, because we can't go like year by year, right? We are going by concept, that this concept is important for our history knowledge, right? So this is the new way of life. They started the storing seeds and the storing animals. Then how we got to know, right? How we got to know that they are doing this? कैसे पता पड़ा कि ये ऐसा करते थे, राइट? कुछ तो आइडिया होगा, मीन्स कुछ तो लॉजिक होगा कि हंटर गैदरर्स ने ये चीज़ भी करी. यस, वी हैव एन आइडिया. We have certain places in our subcontinent, right? On those places we found certain things, and those things signifies that this practice has been evolved at that time. Means कुछ places हमको ऐसी मिली है इंडिया के अंदर, जिन places को हम देख के बोल सकते हैं कि हाँ ये वाली practice उस टाइम पे वो लोग करते थे. They used to do irrigation, they used to store animals, right? And how do we got to know? Remember one thing, we have a person known as archaeologist, right? हिस्ट्री में डॉक्टर्स नहीं होते हैं, हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो सब कुछ करते हैं, राइट? सो टू फाइंड आउट द वेदर द साइट्स वेयर settlements of the farmer or the herders, the scientists studied evidences of the plants and animal bones. So पता लगाने के लिए कि ये साइट्स पे फार्मर्स और हर्डर्स मतलब हुआ करते थे उस टाइम पे, क्या किया साइंटिस्ट ने स्टडी करा किन चीज़ों को, एविडेंसेस ऑफ द प्लांट्स, जो प्लांट्स उस टाइम के रिमेन्स जो हमें मिले हैं कि लाइक दिस इज क्वाइट गुड, हमने उनको स्टडी करा. देन द एनिमल बोन्स, जो बोन्स हमको बहुत पुरानी बोन्स हम उस टाइम की इवॉल्व की या फिर मिली हमें, हमने उनको भी स्टडी किया. देन द साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स, सो वी कैन नो द नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट्स. साइंटिस्ट ने जो उस टाइम के क्रॉप्स मिले, क्योंकि आपको पता है वो क्या करते थे, सीड्स को स्टोर करके डग कर देते हैं और डग करके ग्राउंड के अंदर प्लेस कर देते थे. जो वो ज़मीन के अंदर रहता था, साइंटिस्ट को वो पॉट्स मिले जिनके अंदर से सीड्स निकले हैं, तो साइंटिस्ट ने उनको भी स्टडी किया. एंड दैट स्टडी लीड्स टू गिव अस द फ्रेमवर्क और द आइडिया रिगार्डिंग who were the hunter gatherer, what they used to do for the living, and how they become the farmers. Here is quite a good number of list of 8 places mentioned in the NCERT to learn about it, right? Like the first one is the Mehergarh, which is present right now in the Pakistan, right? From there we found the seeds of the wheat, barley, sheep, goat and cattle. These were the things we found over there, right? It's grains and the bones. Then that is the Kholdiwa, which is the present in the Uttar Pradesh, from where we found the rice, fragments of animal bones. Then the Mahagarh, which is present right now presented in the Uttar Pradesh, we found there the rice and the cattle. Then the Gofkar, where we found wheat and lentil, which is right now present in the Kashmir. Then the Burzom, which is also right now present in the Kashmir, we found where the wheat, lentil, dog, cattle, sheep, goat, buffalo. Then the Chiran, which is right now present in the Bihar, we found that the wheat, green gram, barley, buffalo and oxen. Then the cattle, sheep, goat, pig or the huller. Then the Piampil, where we found the black gram, millet, cattle, sheep and pig, which is right now present in the Andhra Pradesh. So this is the small list regarding the sites we found in from the ancient time. यहाँ पे हमको वो एविडेंसेस मिले हैं दैट सिग्निफाइज दैट कि ये जो साइट से एक टाइम पे यहाँ पे हंटर गैदरर रहते थे. अब इतने ज़्यादा नाम याद नहीं हो कोई इशू नहीं है, बट ये कुछ 2 नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. द फर्स्ट इज़ द मेहरगढ़, राइट, एंड द सेकेंड इज़ द बुर्जोम. ये दिस 2 नेम्स आर सिग्निफिकेंट फॉर अस और इम्पॉर्टेंट टू अस. तो ये चीज़ें तो याद रखना दैट वेयर इज द मेहरगढ़ लोकेटेड. मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन पाकिस्तान. एंड वेयर इज द बुर्जोम लोकेटेड, इट इज़ लोकेटेड इन कश्मीर. अब आप क्वेश्चन आया होगा कि व्हाई दिस 2 साइट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन दिस रिमेनिंग इट्स. यस, यू विल लर्न दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो और इन द प्रीवियस स्लाइड्स, नेक्स्ट स्लाइड्स. सो टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, राइट, hunter gatherer, then they became learned about the farming, then they started farming, then they started storing seeds, then they learned about the herd animals, then they started storing animals, then they become herders, they started taking out milk, they also used those animals for the herders. A long story,
देन दे ऑल्सो स्टार्टेड फॉर अ सेटल्ड लाइफ। मीन्स पहले हंटर गैदर ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, ऐसा हमने देखा था कि राइट। वो स्टोन्स कौन से एज में हम आते, हंटर गैदर्स कौन से स्टेज में हैं? दीज आर फ्रॉम द स्टोन एज। कौन से एज से हैं? दे आर फ्रॉम द स्टोन एज। और स्टोन एज में ये ट्रैवल करते थे एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे, बट देन दे स्टार्टेड सेटल्ड एट वन प्लेस। सो हाउ वी गॉट टू नो अबाउट दिस? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द ट्रैक्स ऑफ हट एंड हाउसेज एट सम साइट्स। हमने कुछ साइट्स देखी ना, 8 ऐसे बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ द साइट्स प्रेजेंट ऑन द सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो archaeologists found certain evidences of that. Then the Buzom, in Buzom, I told you it is an important site in our previous slide. In Buzom, the people built pit house which were dug in the ground and were kept leading into them. They may provide the shelter in the cold weather. Means बुर्जोम में ऐसे घर मिले हैं जो ज़मीन के अंदर बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि बुर्जोम कहाँ लोकेटेड है? कश्मीर में। वी ऑल नो दैट कश्मीर है कोल्ड टेम्परेचर, राइट। वहाँ का जो वेदर है वो कोल्ड होता है। तो उन जगहों पे उन्होंने कैसे घर बनाए? ज़मीन के अंदर, सो दैट वो जो कोल्ड है उससे वो प्रोटेक्ट कर पाए, राइट, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। सो दिस इज द लॉजिक। देन द आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड द कुकिंग and both inside and outside the hut, which suggests that depending on the weather the people cook food either inside or outdoor. मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी एविडेंसेस मिले, कहीं कहीं पे घर के अंदर से ट्रैक्स मिले हैं कि यहाँ अंदर कुकिंग होती है, और कहीं पे कहाँ मिला? घर के बाहर। so, उनको ये भी पता पड़ गया कि इन्होंने घर में भी रहते थे और घर के अंदर भी कुकिंग करते थे और घर के बाहर भी करते थे, एज सुटेबल कि जहाँ पे इच्छा हो जाए। आज खुले में खाना बनेगा इन ओपन, आज घर के अंदर बनाएंगे इनसाइड। सो इट्स डिपेंड होली अपॉन दैम। सो दिस वाज द लॉजिक, राइट। देख रहे हो पिक्चर कैसे हम स्टेप बाय स्टेप हम इंक्रीज कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड को, राइट, अपने नॉलेज को, कि कैसे लाइफ बढ़ रही है ऊपर। सो दिस इज द फ्रेमवर्क। तो ऐसे ही हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? टुवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ। अगेन यहाँ पे क्या हो गया? द स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड एट द मेनी साइट्स। वी नो दैट फ्रॉम वेयर वी आर फ्रॉम द स्टोन एज। वहाँ पे बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले। मेनी ऑफ दिस आर द डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स। कुछ जो थे वो डिफरेंट थे। ओके, फर्स्ट गोइंग टूवर्ड्स इट, लेट्स लर्न दिस थिंग। स्टोन एज जो था, मैंने आपको बोला था कि हंटर गैदर कौन से स्टोन एज, बट इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी इफ़ यू वांट टू देन इट इज़ गुड फॉर यू, इट इज़ गुड फॉर द नॉलेज, राइट। देन दिस इज़ द टाइमलाइन ऑफ स्टोन एज। स्टोन एज को भी 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया था। द फर्स्ट इज द पैलियोलिथिक और द ओल्ड स्टोन एज, द सेकेंड इज द मेसोलिथिक और द मिडल स्टोन एज, एंड द लास्ट इज द नियोलिथिक और द न्यू स्टोन एज। सो दिस वॉज द क्लासिफिकेशन डन बाय द आर आर्कियोलॉजिस्ट, राइट। सो द सेकेंड जो पॉइंट हमारा वो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हमको कुछ नए टूल्स मिले, स्टोन टूल्स, जो कि हमारे अर्ली पैलियोलिथिक जो साइट्स थी उनसे डिफरेंट है, और हम इन टूल्स को बोल रहे हैं ये नियोलिथिक में, नियोलिथिक के अंदर मतलब फॉल होते हैं, मीन्स न्यू स्टोन एज में। देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? दिस इंक्लूड द टूल दैट वर पॉलिश्ड एंड they give a fine cutting edge and molds and the piece used for the grinding grains and the other plant products. Means अब जो टूल्स मिल रहे हैं ना, वो पहले जैसे टूल्स नहीं बचे कि सिर्फ शार्प एंड कर दिया और स्टार्ट। अब जो मिल रहे हैं वो टूल्स को बिल्कुल पॉइंटेड और प्रॉपर शेप में शार्प एंड हो रहा है, एंड देन उनको पॉलिश भी किया जा रहा है। मीन्स स्टैंडर्ड अगेन इंक्रीज हो रहा है। मीन्स उन्होंने लाइफ स्टैंडर्ड तो बढ़ाया, वेपन स्टैंडर्ड भी इंक्रीज किया है। सो दैट्स वाई उनको वेपन्स को भी हमने कौन से में फॉल कर दिया है? न्यू स्टोन एज, दैट इज नियोलिथिक। देन द मोराट्स एंड द puzzles were used for the grinding grains even today, and several thousand years later. At the same time, the tools of the Paleolithic types continued to be made and used, and remember, some tools were also made up of the bones. कुछ जो टूल्स हम उस टाइम पे बनाए थे वो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जो जो हमारा क्ले पॉट्स होते हैं जो हम आज यूज़ करते हैं घर में, वो उस टाइम पे बने थे। वैसे ही कुछ स्टोन टूल्स जो उस टाइम पे दे यूज टू यूज़, दैट today we are also using those tools. So this is the small story regarding this. Then towards the settled life, वापस से अब क्या हो गया? Then
Many kinds of the earthen pots have been found. They were sometimes decorated and were used for storing things. The people began using the pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, lichen, and now become an important part of diet. So, beside, they began wearing the clothes and using the different kinds of materials. For like example, cotton they could now been grown. So, what it is about? It is about, as you can see in this picture. This is the example, or this is the picture, or this is the pots we found from the hunter gatherers phase. ये वो पॉट्स है जो हंटर गैदरर उनके टाइम पे यूज़ करते थे. देख रहे हो आप, सच अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन, राइट, सच अ ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन. मीन्स कितना अच्छे से उनको बनाया गया है, साथ में उनको पेंट भी किया गया, डिज़ाइंस बनाई गई उनके ऊपर. सो उनका स्टैंडर्ड डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा था, राइट. हम जो बोलते थे अर्ली मैन, एंड हमारे माइंड में जो पिक्चर है अर्ली मैन का, अब देख रहे हो हाउ द अर्ली मैन स्टार्टेड और हम कैसे आए हैं. यही फेज है, लाइक दिस इज द डेवलप फेज ऑफ डेवलपमेंट. ऐसे ही धीरे धीरे इंक्रीज हुआ एंड देन दे स्टार्टेड फॉर द बेटर लाइफ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एज आई होप यू रिमेंबर who were the hunter gatherers, how they started learning about the farming and herding, then how they started irrigation, farming and herding, then how they started for storing the foods, how they started for storing the animals, and how the phase of Paleolithic moved towards the Neolithic. Means कैसे वो raw tools, जो raw equipments, जो raw weapons वो use करते थे, then they started towards the polished tools, right. So this was the small development of the history from the hunter gatherers to the growing crops. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.